talk about the idea, what is your why? Okay, so lots of businesses, companies, they think about, what they do, how they do it, why they do it. Those are, three common questions, okay? And so there's a man in US, he is British American, his name is Simon Sinek, okay? So as you all are iGuru technology, software gurus, this guy is leadership guru, okay? So he has taught a lot. We were actually talking with Greta earlier, and she's saying, sometimes she's watching these leadership development videos on YouTube or watching TED Talks, okay? Have any other people watched TED Talks or some leadership coaching videos? Yeah, I've watched a lot. Okay, great. So Simon Sinek, this leadership guru, has given a pretty famous TED Talk on this idea. So he said this is called the golden circle. Okay, everybody say golden circle. Sab log bataye golden circle. Golden circle. Okay, great. So happens is lots of times in businesses, in companies, people ask the question first, what do we do? हम क्या करते हैं? And then, Sorry, Rekha, can you just interpret? Because हमारे साथ बहुत सारे ऐसे staff हैं जो actually थोड़े कमजोर होंगे English में. Okay, great. So commonly, people first ask the question, what do we do as a company? सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, ठीक है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है. कोई आया, ओके iGuru क्या करता है, okay? Then the next question people will ask in company is, how do we do what we सेकंड do? क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आप कैसे करते हो. I mean, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है, या आप कैसा क्या कर सकते हो जो उनको हेल्प करे उनकी बिजनेस में, okay? And then some companies then will say, why do we do this? ओके, कुछ कंपनीज आपसे पूछेंगे, ओके अगर वो कुछ मतलब आपसे पूछेंगे करने के लिए कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो बोलेंगे कि हम आपको क्यों अपना बिजनेस दें, आप ऐसा क्या कर सकते हो, ठीक है ना. कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आपको डील देने से पहले बोलेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैं आपको बिजनेस दूँ करने के लिए. So Simon Sinek actually says this order is wrong. It says from why and how and what. Exactly. Yes, just like this. Most people start what, then how, then why. Okay? He says it should not be like this. Instead, we should start why, then how, then what. I have a similar question because I want to ask this diagram is a little bit wrong. First, we have to say why we are doing something, and then how we can do something, and why do you want to do. Yes, so it's actually saying we start in the center, and then once we know why, then we can go outside to how, and then outside to what. But yeah. Yes, so order he is suggesting is why, then move out to how, then out to what. So this diagram is starting in the middle and then working out. Okay, so each of these things we've talked about a little bit. So what is important we will talk about today is why you start with why. Okay. And then in the future, we're hoping we will meet with you all again. We will talk more like how and what. But today our focus will be why. Okay? So, why is a purpose, cause, or belief? So when you're thinking our company, why do we exist? This is the question here. Because if you don't know why you exist, then nothing else will matter. You will do things, you will know how to do them, but there is no purpose. No purpose in that. Purpose, cause, belief, समझ रहे हैं? Purpose means like अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, तो you should ask why I am doing this task, for what I am doing this task.
मकसद ओके मकसद आपको आपका पता होना मकसद क्या है चाहिए। लाइफ में या ठीक है ना, प्रोफेशनली पर्सनली आपका मकसद क्या है? Without purpose, you will not go anywhere. You will be just like roaming around. You don't know where. I mean, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना? अगर पर्पस है कि नहीं मुझे ये चाहिए है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, देन आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास पर्पस है, ठीक है। बट अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे कैसे करना है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट Cause is like abhiyan, I guess. Cause? Cause. Yeah. Like, कुछ हम जो साथ में कर रहे हैं. हाँ. Yeah. Okay. Good. Great. So today we will be thinking through not just, so we will think what is iGuru's why, but also personal why. Okay? And so from there you can move to how, which we will do in future. And so this is asking a question of there are things that you all will do that make you different from other companies. And that will be how. And then what is just actual service. Sorry, Greta, can I interrupt? Yes. मैंने हमेशा एक चीज कहा है आप लोगों से कि हम दूसरों से अलग रहेंगे। कभी सुना आपने कभी मेरे से? हमेशा हर हफ्ते में ये कहता हूँ कि अगर कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि हमें हटके करना है कुछ। We are not doing exactly what is in the market. है ना शिपाली? Yes, sir. है ना King? Yes, sir. Yeah, I always say that. And to be honest, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं ये हटके हैं। आप मैं चैलेंज करता हूँ, नेम वन सिंगल कंपनी जो इस बिजनेस मॉडल पे काम करता है, राइट? दैट इज व्हाई हम इतने स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन्वेंटिंग समथिंग, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है? सो दैट इज द हाउ. Yes. So this is the order. We will talk about things, but also the order that you need to understand as you are coming and you are doing your work. Because there will be days you're thinking, okay, this is what I need to do today. But it is always important to have why in your mind. Because if you know why, you will be better at how, you will be better at what, and you'll actually be motivated. Because some days, this is certainly true for me, some days the what that I'm supposed to do is not what I want to do. तो मैं नहीं चाहता हूँ उस दिन में, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरा क्यों, ठीक है? मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे जी. पता है. So that is something important to know. Like my wish for today is you all will leave knowing this is why I do what I do, and that will help push you forward as you all are building something together. Okay? So now we are going to take time and consider this. First, I will give an example from my life. Okay? So So when I was in university, I played volleyball. Volleyball? Yeah. Okay. So I played volleyball in university, and so it was part of a team, but also from my childhood, I played team sports. Okay? So what is the goal of a team? What do teams want to do? Win. Exactly. So for a team, there's one goal, one why. Why do you come to practice? Why do you play in games? Why do you... all sorts of things that I'll get into. But the why for a team is to win. Okay? And so then there are lots of things required of you if you are working towards winning. You know? And so then I came in my first year of college, and so I wanted to win. That was what my team wanted to do, what all teams want to do. But also my goal was to become a starter. You understand starter? Okay, so from the beginning of the game, the people who are playing from the start. Yeah, the first player. Yes, first players. And so those players are usually best players. Okay, so that was my goal. I want to be one of the best players
And if I am one of the best players, then I will help my team win. So this is how I came in. This is what I thought. Okay. So I'd go to practice every day for a long amount of time. We had received some teaching from nutritionists, people about how we ought to eat so that our bodies could do what they needed to for practicing, for playing, for competing. We would even also, our coaches would give us a schedule at the beginning of the week and say, this is when the gym is open, when we didn't have practices, so that we would know, come in and have extra time to practice. There would not be coaches, but that we could come in and become better at what we did. So for 4 years, I was doing this, and I realized very early on this team, I am not, right now, one of the best. Okay, so there are other girls on this team who are better than I am. So my desire right now is not necessarily that I will play right now. Because if I play, that might not be what is best for the team, because there are other girls on team who are better than I am. So either I will focus on me or focus on the team. Okay? Is that making sense? Everyone understand it? Okay. And so that will also be true for you all here. Rika, because that's a very good part of the presentation. Okay, Greta का कहना ये है कि वो बिगनिंग में जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो वो चाहती थी कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर हो, वो बेस्ट प्लेयर बन के खेले टीम में. बट आफ्टर 4 years उसने देखा कि जो टीम में जो अदर मेंबर्स हैं, जो अदर लड़कियां खेल रही हैं, वो उससे बेहतर है. तो थोड़ा सा वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हुआ. तो वो अपने बारे में ना सोच के टीम के बारे में सोच रही थी कि वहाँ पे और भी लोग हैं जो मुझसे बेहतर हैं. तो उनके पास ऑप्शंस था कि वो अपने बारे में सोचें या टीम के बारे में सोचें, क्योंकि टीम में ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं. मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? That is going to be the next stage. So then realizing, okay, right now, the way that I can best support this team might not be to be the one on the court playing. So now what can I do that maybe someone else cannot do? Okay? And so it may not have been my desire, I wanted to play. That was my desire, but had to find out, how do I best serve this team? And how can I be a part of us winning, even if I'm not the one on the court right now? So for me, that meant, okay, in practice, I will be the most encouraging member of our team. When other people are doing well, I will let them know that they are doing well. I will also make sure if I see teammates making mistakes, I will say, hey, I noticed you have done this, try this next time. But yeah, go ahead. Okay. Greta का कहना ये है कि उसको ये रियलाइज हुआ कि जो दूसरे टीम मेंबर हैं, they are the best. बट फिर वो ये सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि जो दूसरे टीम मेंबर को हेल्प कर सके. तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लो नेहा है, नेहा कोई चीज़ कर रही है और वो ग्रेटा को पता है कि नेहा कुछ गलत कर रही है, तो वो जाके उसको हेल्प करके, नेहा अगर तुम इस तरह से करोगी तो ये चीज़ बेहतर उभर कर आएगी. तो वो इस तरह से हेल्प करी थी टीम को कि हम सब एक साथ मिलके जो गोल है हमारा जीतना, वो हम उसको अचीव करेंगे. ठीक है? Because it can be easy sometimes. There were days when I wanted to focus on me and say, I'm going to let my teammate keep making these mistakes. Because if she makes those mistakes, then I will move up. समझ गए आप? ये एक हमारे बीच में एक मेंटालिटी है, जबलपुर में है, कि सामने वाला गलती करने दो, वो जितनी गलती करेगा वो मेरा चांस बनता है. अपने को शाइनिंग स्टार दिखाने के लिए हम दूसरों को बता कि कर रही मिस्टेक उसको करने दो, जब टाइम आएगा देन आई विल पंच. मतलब अपने स्वार्थ के
समझ गए आप? स्वार्थ ही नहीं स्वार्थ बनना। स्वार्थ अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सिखाओ कि भाई इस तरह से नहीं, आप इस तरह मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट। मैं किसी का नाम नहीं उठाना चाहता, लेकिन गाय घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा? समझ रहे आप? तो ऐसे एक इंसिडेंट हमारे उस तरह की माइंड सेट हमें अलग करनी चाहिए, ठीक है? So that was not necessarily always easy, but it did end up being what was best for the team. So even for 4 years that I was playing, my original why to start, it never happened. But by my last year in university, what we would do is at the beginning of each year, our team would vote. We would say like, who will be our leaders this year? And usually, the people who play the most get voted on to be leaders. But in my last year, our team voted, and they voted for 3 people. And two of the people were girls who played a lot, and the other person they voted for was me. Because they recognized, even though you might not be the one on the court playing, that you encourage us, you lead us, you tell us when we need to fix things. When we're having a hard time, you can help us see how to move forward. And so even within the team, what was obvious to us is who was playing. But they even began to recognize actually the kind of thing that you do in practice and when we are playing games and giving, inspiration or encouragement, if we don't have that, it is really hard for other people also. ओके, ग्रेटा का कहना ये है कि उसने क्या किया, ठीक है वो टीम में नहीं खेली, पर टीम के लिए उसने एज अ बैकबोन जो एक ऐसा बंदा जो टीम को मोटिवेट करे, अगर कोई हेल्प किसी को चाहिए तो वो उसको जाके हेल्प करे। तो हुआ क्या, जब यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, दे वांटेड टू हैव समवन, मतलब कोई ऐसा बंदा जो उनको लीड करे। तो 3 नॉमिनीज थे, 2 जो बेस्ट प्लेयर थे गेम के वो थे, और एक नाम था ग्रेटा का। तो वो उन्होंने रीज़न दिया कि ग्रेटा क्यों बेस्ट है। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ टीम में नहीं खेल रही है, बट वो क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है। जब उनको ज़रूरत है तो ग्रेटा उनकी हेल्प के लिए खड़ी है। ठीक है, ये रीज़न था। और गाइड कर सकती है, क्योंकि सारी चीजें नोटिस कर रही है। शी सो मच इन्वॉल्व्ड, इवन नॉट बीइंग ऑन द कोर्ट। एक प्लेइंग मेंबर ना हो के भी बाहर रह के उसका पैशन, उसका सेल्फलेसनेस की वजह से वो टीम को इतनी ज्यादा जानने लगी, एज इफ एक कंपनी का बाप या एक परिवार का बाप की तरह। मतलब कौन सा बच्चे को क्या हेल्प चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो बाहर से सीखा। और ये चीज़ वो लोग ने टीम मेंबर्स ने भी फील करी कि नहीं, ग्रेटा ही बेस्ट है, तो ग्रेटा को वोट किया। It's kind of like everyone was like they are good at games. Everyone was good at game, but they need a leader, so they chose you. In my opinion. Yes. Sort of. Yes. So yes, we all were, playing, and I did play also, but not necessarily as much as was what I wanted to. But recognizing in teams there are different roles, and sometimes the ones that are seen we think are the most important, and those are sometimes the ones we want, because many of us we want to be seen, noticed, recognized. But sometimes in teams, there are also roles that are not seen, not recognized, and not noticed. But if people are not in them, then you might not be as successful. You need people doing different types of things. कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो एज अ टीम, चाहे वो छोटा सा टास्क हो या बड़ा टास्क हो, कई बार हमको लगता है कि हमको नोटिस नहीं किया जा रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग सब मिलकर जो काम कर रहे हैं तो वो नोटिसेबल हो। हाईलाइट हर कोई होना चाहता है कि लाइक बॉस, मुझे कई बार होता है ना कि बॉस ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट बॉस कभी आके पूछते नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज ही नोज कि वो किसको नोटिस कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो एंड ऑफ डे ये है कि हम सबको मिल के एज अ टीम काम करना है ना। एक ही गोल है ना कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी ऑफिस की आंटी एक दिन नहीं आती तो आप लोग की बैंड बजती कि नहीं? बजता है ना। तो दैट इज हाउ ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, जैसे अभी मैं कोई एक फिल्म ले लूँ जो हिट मूवी, उसमें हमको सिर्फ शाहरुख खान दिखता है या जो लीड हीरोज दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे कैमरामैन, डायरेक्टर, प्लेबैक सिंगर, कई फिल्म्स तो गाने की वजह से हिट होती है, लेकिन उनके पीछे जो लोग छुपे हुए रहते हैं वो भी हीरोज हैं, ठीक है। And so in that last year, actually was the first time we won the championship for our team. So, All because of Greta. no. So you just see, so my desire would have been in that championship game to be the one who was playing full time. That is what I would have wanted. But knowing that things happening, I did different things for our team that were also helpful, even if they were not seen. So now, actually, Zack is going to talk more about this idea of team and being a good team and what that looks like, how it works. Okay. Thank you. Great. थैंक यू श्रेया। Sure. अरे पहुंच जाएगा प्रेस। All right. Everyone doing good? सब लोग खुश हैं? Happy? Okay. So, Greta ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक स्पोर्ट्स टीम। किसने स्पोर्ट्स खेला है टीम में, सब चाहे ग्राउंड में या टीम में सब लोग खेले हैं। So एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक स्पोर्ट्स टीम। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। I want to give a different example. It's a village, गाँव. Okay. This is also a little bit from Simon Sinek. So, anybody from a village? क्या कोई गाँव से है? Yes, I'm also from village. Don't be shy, शर्माओ नहीं, right? But सब लोगों ने देखा है village, right? Okay. So, I want you to imagine Indian village, American village, कोई भी village, okay? Zack, sorry to interrupt. यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी कि वो गांव से नहीं, जबलपुर इंडिया का जबलपुर इंडिया का सबसे बड़ा गांव है। जबलपुर का जो नाम है जबलपुर नहीं है, वो कौन बता सकता है वो जबलपुर का असली नाम? जवालीपुर। Okay, nice. Okay. So this is our village. This is Jabalipur. And but imagine maybe 200 years back, 300 साल पहले, 400 साल पहले. So गांव में क्या dangers रहता है? आप लोग बताइए. What dangers, क्या खतरा है गांव में? Animals. Wild animals. Okay. कौन सा animal लेकिन? Tiger. Okay. Tiger. Snake. Leopard. Okay, snake है. Good. Elephant भी है काफी dangerous. Okay. Yes, why not? Cockroach. Cockroach. Okay. I would like to add one. Okay. ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं। सरपंच। वो सोच पा रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप है हमारा सरपंच। और क्या है dangerous? और क्या है? बस एनिमल्स हैं। Rules and regulations. Okay. Rules and regulations. Maybe. लिख के रखोगे क्या? What else? Like the belief system, if it's Yes, it's a belief system. Okay. Okay. Could be शायद. It's not good. Okay. और क्या? From बाहर से क्या dangers है? They don't have the facilities like the towns. Okay. Maybe because of that sickness, Yes. right? बीमारी. COVID-19. Okay. What else? Robbers रहते हैं, चोर, है ना? हाँ, डाकू. And in years
back also enemies are there. Yes, sir. Enemies, दूसरा village, दूसरा राज्य, right? So for this purpose इसलिए गांव का एक वो लोग बाउंड्री भी बना देते थे, but गांव का हर एक मेंबर अपने ऊपर विलेज का सुरक्षा लेता था, right? की responsibility कि यहाँ इस विलेज का responsibility is upon me, इसका safety मेरे ऊपर है, right? So पर वो कैसे responsibility लेते थे? बस ये कि वो अपना अपना काम ईमानदारी से खुद से अच्छे से करते थे और उससे विलेज का सेफ्टी होता था. So as an example, sorry, just 1 minute. Say we have a blacksmith, right? Blacksmith we know, loha. Lohar. So lohar. Okay, good. Thank you. So he or she makes the hasiya, sickle, and any the pots, karai, all that. Also weapons maybe. जो गाँव की village defense के लिए weapons भी बनाते हैं. So he does his job well. वो अच्छे से अपना काम करता है. So village is safe. Protection is there, right? Farmers, किसान भी हैं. वो अच्छे से अपना फार्मिंग खेती करते हैं. So सभी के लिए मतलब खाना है और एक स्टोर भी होगा विलेज के लिए. एक हर्ड्समैन है जो हमारा कंपनी में भी हर्ड्समैन है जो बकरे चराते हैं, बट वो गाय बैल जो भी वो चराते हैं. कारपेंटर है, पढ़ाई है, वो सब अपना अपना काम करते हैं और उतना ज्यादा सोचते भी नहीं है, बट अपना काम करते हैं और उससे विलेज का सेफ्टी होता है. बट ऑन द अदर साइड, नेगेटिव साइड में हम देखते हैं कि यदि कोई अपना जॉब अच्छे से करते नहीं, अपना काम अच्छे से करते नहीं और कोई सेल्फिश तौर से selfishly if anyone does their job, या अगर कोई greedy है, यदि कोई घमंड करता है, if anyone is prideful, then there is danger for village. Is it like है कि नहीं? मतलब एक इंसान अगर पूरे गांव के मकसद के खिलाफ चला जाता है, कोई भी रीजन के लिए, कोई भी लालच भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर वहां पे एक बहुत बड़ा इंटरनली एक खतरा, बाहर से तो खतरा है ही, इंटरनली एक खतरा है. और ये जो बाउंड्री जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है, राइट? सो एज एन एग्जांपल, मान के चलो कि किसी का काम है बेरीज कलेक्टिंग, बेर कोई भी जंगल में जितने भी फ्रूट्स हैं, डेली वो जाता है और उसको कलेक्ट करता है ना? और एक दिन वो जाते हुए वो दूसरे गांव के पास चले जाता है, वो देखते हैं कि वाह, हमारे गांव में 10 रुपये मिल रहे हैं किलो, यहाँ पर 20 रुपये मिल रहे हैं, राइट? सो ही डज ऑल दिस कलेक्शन, सारी कलेक्शन वो करता है, उस गांव में 20 रुपये के लिए बेचते हैं, फिर आके बोलते हैं कि सॉरी पूरा जंगल खाली है ना? बाद में क्या होगा? कहीं ना कहीं उनकी विलेज में स्कर्वी हो जाएगा, कुछ बीमारी हो जाएगा, नहीं वो लोग अच्छे से वो विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, है ना? वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ, साइड बिजनेस कुछ, बट वो ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ द विलेज. अनदर एग्जांपल, लेजी फार्मर, वो किसान लेजी है, शायद पिछले साल अच्छा हार्वेस्ट था, सो ही डजंट डू गुड जॉब दिस ईयर, एंड फॉर हिम इट्स फाइन, उसके लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट पूरा विलेज को क्या होगा? प्रॉब्लम, सब लोग भूखे हो जाएंगे, hungry, will be hungry. The blacksmith, lohar, right? He also thinks I've done enough, and little bit slack, right? And then all of a sudden these guys come, enemies come, right? Nothing is there, everything's rusty, right? Protection is not there. Okay. और एक लीडर जो है, सरपंच, in my notes, don't mind, please. ये सरपंच, he gets a little bit proud feeling, right? I'm a very good leader, है ना? मैं स्कूटी में घूमता हूँ. Yeah, or maybe it's team leader. Where we met him? This guy, yes, head supervisor. A little bit thinks I'm doing good job, so I'll
sit back, मैंने अपने कुर्सी पे बैठूंगा, है ना? Everyone else will do their jobs, right? But then what happens? Villagers revolt, say no, क्या बोलते हैं? Revolt को क्या बोलेंगे? मतलब हाथ मतलब वो बटन जाएंगे नहीं रिवोल्ट करते हैं, मतलब खड़े आते हैं, ईमेलबाजी, आंदोलन हो जाएगा कि लीडर अपना भाग नहीं ले रहे, राइट? सो एवरी सिंगल मेंबर, गांव का हर एक मेंबर को अपना काम अच्छे से करना है और अनसेल्फिशली भी करना है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राइट? जस्ट लाइक ग्रेटा टीम, स्पोर्ट्स टीम के लिए काम कर रही थी, वैसा ही विलेज का हर एक मेंबर अपने विलेज के लिए काम करना है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी एक विलेज के जैसा है, राइट? एक गांव के जैसा है। वी ऑल हैव आवर ओन रोल्स, हम सबके पास अपना अपना काम है जो पूरा विलेज, पूरा कंपनी का सुरक्षा के लिए, कंपनी का सेफ्टी के लिए, कंपनी का सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि हम अच्छे से वो जॉब करते हैं और अच्छे से भी अच्छे काम करते हैं, so company will go forward, right? But यदि हम नहीं करते हैं या selfishly करते हैं या in a greedy way, in a proud way हमारा काम करते हैं अपने लिए, then company का damage हो जाएगा। जिस प्रकार गांव का safety नहीं है, उस प्रकार हमारे company में। So let's talk now about your company. What is the dangers to your company? Company का खतरा क्या क्या है? Tigers तो है already, but उसके अलावा what are some dangers that your company, every company faces? हर एक company. Competitors. Okay, that's right. Main one, competitors. Okay. This is real danger कि नहीं real danger? Real danger, right? Maybe they won't come and burn our village down, शायद वो आके हमारे, but शायद वो जलाएंगे भी, नहीं पता, मतलब very real danger is there, right? Always they're looking to harm our village, right? Okay, what else? This is big one. Disclosing company information to somebody else. Okay, sure. So privacy, or what do we call it, Vinny? trade secrets, Trade secrets, good. Good. What else? और क्या? Someone put down rules. किसी ने rules बोला किसी ने बात, but regulators वो मतलब हमारे लिए काम भी करते हैं, but ऐसा कुछ regulators है जो searching कर रहे हैं, छोटी मोटी बात को भी, है ना, उनको भी मतलब उनको भी अपना काम करना है ना, उनको भी अपना मिलना है। So we have to always be, maybe they're not danger for us, but we have to be, हमारे पास वो awareness होना चाहिए कि लोग देख रहे हैं हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। Okay. The income tax वाले। Yeah, income tax, right? Okay. Okay, good. और क्या dangers हैं? हमको नहीं डेंजर है ऑफिस के लिए। हाँ तो देखिए, नहीं नारा बदल गया अपना। Okay. आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। Internally. Okay. Internal हम उस विषय में बात करेंगे अभी। Internal. Okay. What about the changing markets? Okay. हमारे बिजनेस मॉडल हम मतलब एक पॉइंट में हमने फिक्स किया बिजनेस मॉडल, हमने बनाया बिजनेस मॉडल, पर तब से मार्केट चेंज होते आ रहा है, राइट? सो वी नीड टू चेंज विथ इट, राइट? एनीथिंग एल्स? एंड देन देयर इज ऑल द डेंजर्स जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। 2019 में ये कोविड-19, राइट? कभी सुना नहीं था कोविड-19, पर अचानक आ गया, बहुत बड़ा डेंजर है, अनएक्सपेक्टेड, राइट? हमारे बिजनेस के लिए। ओके, सो जिस प्रकार गांव वाले अपने गांव का सुरक्षा कर सकते हैं बस अपने ही काम से, राइट? उसी प्रकार आप सब अपने कंपनी का सुरक्षा, सब आपके कंपनी का सक्सेस के लिए कुछ कर सकते हैं
आपके जॉब को करते हुए और अच्छे से अच्छा भी यदि आप अपने काम करोगे तो ये डेंजर्स सब कम होते जाएगा और the company will grow also, right? So जैसे कि यदि आपको एक असाइनमेंट मिलता है, हर एक असाइनमेंट का एक डेडलाइन होता है, राइट? तो यदि हम डेडलाइन से 4 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले भी हमारे असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, so वो एक मार्जिन है. इट्स लाइक हम ये बाउंड्री थोड़ा और भी बढ़ा रहे हैं, राइट? हमारे विलेज में कि अब आपके पास 2-3 दिन है, आप कुछ न्यू काम कर सकते हैं कंपनी के लिए, कुछ बढ़ा भी सकते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि असाइनमेंट डेडलाइन से पहले भी फिनिश हो गया. डेडलाइंस ऑलमोस्ट मैजिकल है ना? एक जादू है डेडलाइन में कि हम बोलते हैं कि 12 बजे रात को 19 तारीख को होना, मतलब फिनिश होना ही है, तो वो फिनिश हो ही जाएगा, राइट? यदि हमने 18 तारीख बोला तो 18 तारीख भी फिनिश हो जाएगा, है ना? तो आप डेडलाइंस ऐसा ना सोचिए, आप सोचिए कि डेडलाइन से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाए, ताकि विलेज का बाउंड्री थोड़ा बढ़ा दिया जाए, राइट? We have a little more margin for our company. हम सर्च कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ बिजनेस के लिए. हमारे बॉस, हमारे टीम लीड का वेट नहीं कर रहे हैं कि वो हमें एक असाइनमेंट दे. हम खुद देख रहे हैं कि और क्या हम कर सकते हैं हमारे विलेज के लिए, राइट? ताकि सेफ्टी हो, विलेज बढ़ जाए, फल जाए, मतलब सक्सेसफुल हो जाए. हम जो भी करते हैं हम 100% या 110% भी करते हैं, राइट? हम वेब डिज़ाइन कर रहे हैं तो मुझे कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं और शायद कोई नोटिस नहीं होगा, है ना? और या फिर यदि कोई वेबसाइट को देख रहे हैं तो 100 में बस 1 लोग नोटिस करेगा कि हमने कुछ जुगाड़ किए हैं. बट यदि हम इस विलेज को सेफ रखना चाहते हैं तो वो हम नहीं करेंगे. 100%, 110% तक भी हम हर एक असाइनमेंट पूरा करेंगे. बट ऐसा हमें करना चाहिए, but on the other side कुछ consequences are there, है ना? यदि हम अच्छे से हमारा जॉब नहीं करते हैं, यदि हम कहीं आलसी, lazy और greedy और maybe a little bit prideful बनता है, selfish बनता है, so consequences are there for our village also. हमारे गांव के लिए भी कुछ परिणाम है, right? जैसे कि वो berry picker है ना, वो जो fruits इकट्ठे कर रहा था, उस प्रकार हम शायद side business start करेंगे. पर्याप्त है, कंप्यूटर सब कुछ है यहाँ, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं. But just like एक गांव में सब लोग बीमार हो गया क्योंकि वो विटामिन नहीं मिल गया, ऐसे ही हमारे बिजनेस डाउन होने लगेगा क्योंकि हम फुल एफर्ट नहीं दे रहे हमारे बिजनेस को. और हमें थोड़ा सा फायदा मिल रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का मतलब नुकसान है और लॉन्ग टर्म हमारा नुकसान भी है, राइट? हम मतलब विलेज में हम इस चीज को जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ फायदा उठाएंगे, वो बेरी पिकर अच्छा मस्त कमा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम सब लोग बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सो उसके लिए भी नुकसान है, राइट? सेम वे हम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, कंपनी नहीं देख रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म हमारा फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपनी का नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा, राइट? हम सबको इस विलेज में रहना है, राइट? सो हम सबको इस विलेज को अच्छे से बनाएं. द लेजी फार्मर, हमने वो आलसी किसान जो सोचा कि पिछले साल बहुत कुछ इकट्ठे किए, बस मेरे लिए पर्याप्त है. इट्स लाइक इफ हम कुछ वेब डिजाइन कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट्स हम निकाल रहे हैं, बट एकदम परफेक्ट हम नहीं करते हैं, 100% हम नहीं करते हैं, 80% या 90% भी करते हैं, राइट? पर क्या हो जाएगा बाद में? यदि आप 90% तक अपना काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
Not fruitful? Yeah. Why not? ऐसा क्यों? Right. कस्टमर को क्या चाहते हैं? 100% चाहते हैं या 90% चाहते हैं? 100% चाहते हैं, right? 90% कस्टमर पहचानता भी है, right? जब अनसेटिस्फाइड होगा, शायद वो मतलब कुछ चिल्लाते हुए अपना पैसा देगा भी, but next time नहीं आएगा, right? क्योंकि बस हमने 80% तक काम किया, 90%, 95% तक काम किया. Still that 5% is lacking. 5% is lacking, right? और इतना competitors है जो 100% भी करेगा, right? So that is also there. Leaders को भी जिस प्रकार हम जानते हैं कि if a village leader becomes proud, so problem होगा पूरा village के लिए. Team leaders को भी हमारे बाइबल में लिखा है कि जो whoever wants to be first should be last and servant of all. I don't know exactly in Hindi, but जो पहला होना चाहता है उसको नीचे से start होना है. सभी का servant होना चाहिए. नौकर या सभी को serve करना चाहिए जो एक leader है. If not, same like Greta, what she did in Right. university. Right. But if not, if leaders are always pushing everyone else down, making others look bad, यदि कोई टीम लीड किसी को दबा रहे हैं, अपने inferior के लिए credit अपने पास ले रहे हैं, so वो जो काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, right? And वो अच्छे से आगे काम भी करेंगे, right? और blacksmith जो है, वो blacksmith अपना वो लोहार अपना काम नहीं कर रहे, तो जाके वो दुश्मन आ जाते हैं, विलेज को फिनिश करते हैं. उसी प्रकार यदि हम हमेशा अपना काम नहीं कर रहे, हमेशा तैयार नहीं हो रहे हैं, so in the end हमारे competitors are always ready है ना? So we're all like a village, right? हम सब एक गांव है, एक village है, और हम सब हमारे village के लिए आगे काम बढ़ाना है, आगे हमारा काम करना है, अच्छे से करना है. So can we take 5 minutes discussion के लिए थोड़ा सा? So यदि आप लोग अपने अलग-अलग teams में आ सकता है, और no more than 5 members, यानी कि यदि आपकी टीम में 10 मेंबर हैं तो आप 2 ग्रुप्स में आ जाए और आप डिस्कस कीजिए 5 ways that you can improve your village. 5 तरीका जिससे आप अपने गांव को यानी कि आपकी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, improve कर सकते हैं. Okay? So in groups of 5 आप लोग आ जाइए और सोचिए, और किसी के पास यदि नोटबुक है या फोन में 5 ways आप लिख दीजिए, फिर हम थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे. Correct. So do you want them to all of them to go out at first and then they come back as 5? They can just get in groups of 5 now. Okay. And they'll discuss these 5 things just for 5 minutes. Yeah. And then a spokesperson from each group will share with the group. Okay. So do they have to go out or just do it here? You can like make each. It will be easy if they go out. Yeah. So So आप सब चले जाओ अपने टीम लीडर के साथ और 5 ऐसे तरीके ढूंढ के लाओ जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो सके. Like जैसे बैठे हो या तो वैसे या फिर you can choose 5 people who wants to go. yeah. Okay. बोल देना हमारी तरफ से. And यदि